Hello students, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. दोस्तों आज है 5th September और आज है Teachers Day, which is observed every year to commemorate the birthday of India's first Vice President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a scholar, philosopher and teacher. He also received Bharat Ratna Award for his contribution to Indian education. चलिए दोस्तों फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। UPA MLA रिटर्न टू रांची फॉर ट्रस्ट वोट, ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है ट्रस्ट वोट के बारे में। तो इट इज अ मोशन थ्रू विच द गवर्नमेंट ऑफ द डे सीक्स टू नो वेदर इट स्टिल एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। Our next important headline is a golden memory of Rajamahendravaram. ये available है पेज नंबर 6 पे and it is related to paper 1 history. In this article we have to know about Rajamahendravaram. So it is a city which was built by Eastern Chalukya king Rajaraja on the banks of Godavari river, and recently it celebrated the completion of 1000 years of coronation of Rajaraja Narendra, who ruled the city in 1022, right? Our next important headline is India Australia from divergence to convergence. ये available है पेज नंबर 8 पे and it is related to paper 2 international relations. In this article we have to know about India Australia bilateral relations, recent developments and future prospects. तो बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल में इसको समझाया गया है। Apart from it we have covered it on our website, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। Our next important headline is Coercion as conversion. ये available है पेज नंबर 8 पे और ये related है पेपर 1 सोसाइटी से। In this article we have to know what are the issues faced by LGBTQIA+ community in India, government's efforts in this direction, and what more steps need to be taken in this context. So recently, another layer of discrimination against this community is being removed from the National Medical Commission, declaring conversion therapy as professional misconduct and empowering state medical council to take disciplinary action if the guidelines is breached. Apart from it, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारे पॉइंट्स को अपनी वेबसाइट पे भी कवर किया हुआ है और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। Our next important headline is a lot is at stake for India Bangladesh ties. ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। In this article we have to know about the present status of India Bangladesh ties and future prospects. तो इंडिया बांग्लादेश टाइज को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज चेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट, ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे। इट इज रिलेटेड टू पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. इट इज ऑल्सो नोन एज पॉस्को एक्ट, इट्स पर्पस, चैलेंजेस एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द लॉ। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने अपनी वेबसाइट पे कवर किया हुआ है और उसका लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम इट आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज डिप्लॉइंग 5G इन अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन 4G टेक्नोलॉजी, ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे and it is related to paper 3 science and technology. In this article we have to know about what is 5G technology, advantages, challenges and conclusion and way forward. तो 5G टेक्नोलॉजी को हमने कई बार अपनी वेबसाइट पे कवर किया हुआ है, उसका लिंक अवेलेबल करा दिया गया डिस्क्रिप्शन में। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप उसको देख सकते हैं। Our next important headline is International Monetary Fund's staff level agreement with Sri Lanka. ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे and it is related to paper 2 international relations. In this article we have to know what is staff level agreement and its objectives. Recently, IMF and Sri Lankan authorities have reached a staff level agreement to support Sri Lanka's economic policies with a 48-month arrangement under extended fund facility of about $2.9 billion. अब इसकी relevance क्या है and objectives क्या हैं? It will support Sri Lanka's program to restore macroeconomic stability and debt sustainability while safeguarding financial stability, reducing corruption vulnerabilities and unlocking country's growth potential. Our next important headline is Untangling Kerala's Lokayukta controversy. ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2022, ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिसिज्म एंड व्हाट लाइज अहेड। तो इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है और उसका लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट। Our next important headline is Dark Sky Reserve to come up in Ladakh. ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस आर्टिकल में जानना है डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख in next 3 months. What is Dark Sky Reserve? It is a designation given to a place that has policies in place to ensure that tract of land or region has minimal artificial light interference. The International Dark Sky Association is a US-based non-profit that designates places as international dark sky places, parks,
centuries, and reserves depending on the criteria they meet. Our next important headline is ISRO test system to recover spent rocket stages. ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस आर्टिकल में जानना है व्हाट इज एन इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर एंड इट्स रेलेवेंस। So recently, ISRO successfully demonstrated new technology with inflatable aerodynamic decelerator that could aid cost-effective recovery of spent rocket stages and safely land payloads on the other planets. अब inflatable aerodynamic decelerator है, it was designed and developed by ISRO's Vikram Sarabhai Space Center on Rohini 300 sounding rocket. It has huge potential in variety of space applications like recovery of spent stages of rocket, for landing payloads on to the Mars or Venus, and in making space habitat for human space flight missions. Our next and last important headline is scientists remain skeptical about how nano urea benefits crops. ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 एग्रीकल्चर से और इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंक्लूड किया जा सकता है। इस आर्टिकल में हमें जानना है नानो यूरिया के बारे में और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो रिसेंटली नानो यूरिया हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कमर्शियल यूज बिकॉज ऑफ इट्स potential to substantially reduce the import bill. Nano urea क्या है? It is a fertilizer based on nanotechnology and it is the most crucial chemical fertilizer for farmers in India. आज के लिए इतना ही। जाते जाते लास्ट में यही कहेंगे कि success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Thank you.